Good evening, everyone. Today we have topic that is the that is called Prahaar. Prahaar is the first law that you can say it is the anti-terrorist policy for India, and everyone is talking about the what is the Prahaar and how it work and whatever the law was available in India, whether it was sufficient or not. And if that was not sufficient, so how India was going till date and from today, how India will proceed. So that's why it is a very important topic for every citizen. We must be aware about the what is the law and how it will work. Reason is that if there is some action is taken by you and me by intention, by mistake. And if our action is coming in preview of the Prahar, then we will also consider as the terrorist, or we can be linked as the terrorist, or we can be asked by government of India. So it is the most important thing we have to understand what we have not to do. And if there is the uh, any action or any a step is taken without any intention but by mistake we have taken, so we can rectify within the time if we are aware. As you can take the example, it is the well-known rule कि on road we have to walk on left side road. Again, suppose that we are walking or we are going on right side of road. Okay, then what will happen? We are doing the wrong thing. Okay, so when we have aware, no, it is the wrong. Then what we do? We move from right to left and we try to walk and we try to go whatever the place we want to go on the left side of road. So that we have to understand what is the law, and we have done any mistake by without knowledge or unintentionally. So if we got the information that this action is mistaken or this action is not good for India health, or you can say it can be create some problem, you and me, why not we have to come on the right track? That is the reason that today I have taken the topic Prahar, and that is the most important thing for you and me. So, so this law is taken by government of India to stop terrorism in India. So we are aware कि it is not a story of the 1 day, 2 days. We you can take the example of the last at least after it is in India there was some terrorism was working, whether it is the Punjab, whether it is the Kashmir, and in the some part of India, okay, the everywhere there was some terrorist, and we are well aware that after 95 to 2010, after 95 2010, whenever we are going in Maharashtra, every 2 and 3 months or 5 to 6 months there is some bomb blast, and when we are traveling by bus, in bus, by train or anywhere, then there is some kind of the warning is written like डोंट टच एनी अनवांटेड गुड्स, और कोई लवारिस वस्तु को ना छुए, अपने सीट के नीचे देख ले, इस तरीके से। एंड इफ देर इज सम suspicious article, unwanted goods, then we never try to touch, we try to call police and we inform कि this is the suspicious item or this is the untouched item, nobody is touching, then it is there is something red signal. But right now, there is no such as the scenario. And I am 100% sure, even the new generation, you can say the Gen Z that lots of person is saying, our new generation, they are not aware that particular warning कि अपने सीट के नीचे देख ले, लावारिस वस्तु ना छुए. But as we have faced that situation before 10 years, 12 years, 5 years back, right now, even वी फॉरगेट कि बस में चढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू सीट के नीचे देख लो लावारी बस को, ऐसा हमारे दिमाग में अब नहीं आता. रीजन इज दैट कि इन लास्ट 7 to 8 ईयर वी आर नॉट
listening lots of the terrorist attack. There is the like last 2 months back there was the some attack in Delhi, and there is the some attack in the Srinagar, and there is the some more in the last 10 to 12 years. But when we are taking the history before 12 years, then it was the one bomb blast in the every month. It can be anywhere. I'm not, or this session is not for politically discussion. It is for the awareness. Okay, so that's why government of India has taken the law, and you must be aware कि Home Ministry has given the one direction कि within the 1 and 2 year we will destroy all connection, all nexus of Maowadi, or you can say Naxal. Okay, and now it is the time. They had the deadline March 2026, and we are aware कि every day we are listening, we are reading any news, or we are reading the newspaper. Okay, कि इतने आतंकवादी को मार गिरा दिया गया, इतने माओवादियों को सरेंडर कर दिया, इतने को गिरफ्तार कर लिया गया. What I want to say, कि if we have the intention, or we have motive, we have the good intention, so definitely we can achieve anything. So that is the same thing is happening for the terrorism, because there is some difference. Maowadi or Naxal uh, uh, within the circle, or we can say within the country, and Naxal is created by uh, resident of India, but Atangwadi is coming from outside, but they perform, they did, they act in inside India. So today we are going to discuss about what is the Prahar, and what is the pro and cons of this law, and why Indian opposition is not happy with this particular rule regulation. Home Ministry Home Ministry has issued the full statement, and he has Home Minister Amit Shah has given the around 30 minutes speech about the Prahar, what is the Prahar and how it will work. Okay, so today we are going to decode each and every aspect, each and every moment, so we can understand what is the Prahar and how it will work India. The first thing is that in the first poster of the Prahaar, that is the issued by Government of India, you can say Ministry of Home Affairs. The first thing is, it is saying, first slogan, zero tolerance and no safe हेवेंस फॉर टेररिस्ट इन इंडिया. इट मीन्स कि टेररिस्ट इन इंडिया जो आतंकवाद कहते हैं, कि आतंकवाद के लिए हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं है, हम उसको बर्दाश्त किसी भी एंगल पर नहीं करेंगे, और हम उसे वी विल नॉट गिव द सेफ हेवन कि हाँ जी आप चले जाओ. या फिर एज वी आर अवेयर कि 9/11 जो बॉम्बे में हुआ था, आफ्टर दैट they have you can say they have created lots of the issues, lots of the they killed the lots of the Indians, okay, in the 3 to 4 days. But after that, whether India has taken any action, no. So Prahar is saying that now it will the zero tolerance and no safe haven for terrorists in India, and we will work कि whatever the action we have to do, so we will do. And Prahar is the name, that is the Prahaar. So every word has the own significance and own meaning. Like P is the prevention. As we are aware कि हम लोग डॉक्टर से एक सुनते हैं कि बीमार से अच्छा होता है प्रिवेंटिव इज द बेटर देन क्योर, कि हम बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम प्रिवेंट करें अपने आप को. लाइक डॉक्टर इज सेइंग कि मान लो कि मेरे को शुगर है, एंड डॉक्टर इज सेइंग कि मनीष आप बाहर की मिठाई नहीं खाओगे. इफ यू वांट टू टेक द टी, तो यू हैव टू टेक टी विदाउट शुगर, ओके, एंड एक्सेट्रा, एंड you have not to eat lots of the rice, etc., all those things. Okay, if I'm not adopting, or I'm not accepting direction of doctor, what will happen? I have to take the lots of the medicine, or might be possible after some time I have to be in hospital, I have to go ICU, etc., all those things. But if I'm taking the care as
as per direction of the doctor, कि I'm not taking outside sugar, I'm not taking sweets, I'm taking tea but without sugar, etc., all those things, and on time I'm taking medicine. तो if तो आई एम प्रिवेंटिंग माई सेल्फ, तो व्हाट विल हैपन कि मेरा जो बॉडी है दैट विल रिस्पॉन्ड, और मैं ज्यादा इश्यूज मेरे में नहीं आएगा। तो दैट इज द पी स्टैंड फॉर द प्रिवेंशन। ओके, एंड दैट देयर इज द सेकंड लाइन इन द पी, द प्रोएक्टिव सिक्योरिटी, मतलब हम अपने सिक्योरिटी को ऐसा करेंगे जहां पर कोई पहले एंट्री करना नहीं आ पाए, या एंट्री करने में ही हैज टू गिव लॉट्स ऑफ द इश्यूज, और उसको एंट्री करना ही उसके लिए आसान ना हो। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट द एटमोस्फियर, वी विल क्रिएट द वॉल, कि जहां पर कोई भी आदमी आसानी से एंट्री नहीं कर सके। तो इट इन अनदर वर्ड, स्टॉप टेरर बिफोर इट स्ट्राइक, मतलब टेरर को स्ट्राइक करने से पहले ही हम प्रिवेंट कर ले, और प्रिवेंट करने के बाद अर्ली डिटेक्ट कर ले और उस पर हम शिकंजा कसे। लाइक मान लो कि मैं घर पर हूं और मेरा छोटा भाई, मुझे पता चल गया है कि माय यंगर ब्रदर इज डूइंग स्मोक और ड्रिंकिंग, ही हैज द हैबिट ऑफ द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, and in evening he's going outside home to have the smoke, etc., all those things. If I am aware कि right now it is the 4 o'clock and he's going outside home to have a smoke, to do a smoke, okay, so if I am taking the some prevention, like I have engaged my younger brother in the some other activity. You can say like art, or we are watching some cricket, we are watching some film, etc. Or I have given the some task according to his hobbies. What will happen? He will he will forget smoking, or he will forget drinking for the some part time. Okay, for the some time. If I'm taking the such kind of the action activity for the longer time, like 5 days, 10 days, 20 days, 1 month, then what will happen? It is the prevention, so I can cure my elder brother to have the drinking habit, to have the smoking habit. Okay, so first thing, that's why government of India is saying ki we have to do the prevention activity, proactive security, or we will try to stop terror before it strikes. सेकेंड थिंग इज द रिस्पॉन्स, इफ ड्यू टू सम रीजन की वो स्ट्राइक कर ही देते हैं, लेट्स एज्यूम वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, ओके, एंड ड्यू टू सम रीजन दे हैव डन, बिकॉज लॉ में कहता है, या फिर इट इज द वेल नोन, कि आप जितना भी लॉ बनाएंगे, जितना भी आप कानून बनाएंगे, उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल दिया जाएगा। जैसे आई आई वांट टू से वन थिंग, वी आर ड्राइविंग कार, तो कार ड्राइविंग में एवरीबॉडी इज सेइंग कि डोंट यूज मोबाइल फोन, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन। व्हाट वी से कि हम हमारे स्टेयरिंग पर ही है, तो विल कंट्रोल इन ऑन स्टेयरिंग, एंड वी आर टॉकिंग ऑन मोबाइल बाय लाउड स्पीकर। तो दिस इज द, यू कैन से मिस यूज ऑफ द लॉ, और यू कैन से कि वी आर बाई पासिंग द लॉ, कि ये स्टॉप क्यों किया गया है, कि we have not to call while driving. Reason is that ki suppose that my wife is make the call. I was on the road and it was the 40 and 60 kilometer per hour my car. My wife is saying कि घर पर बेटा गिर गया और उसको बहुत सारा चोट लग गया. What will happen? There will be the some strike in mind, or might be possible just I will suddenly I will make a break, or might be possible my car will be not in my control. तो मैं किसी को डैमेज कर दूंगा या कोई मेरे को डैमेज कर देगा। ओके, तो दैट्स वाई तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि फर्स्ट वी विल प्रिवेंट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल प्रिवेंट, तो वी विल डू द रिस्पॉन्स। तो वी आर सेइंग कि while car driving, I'm not having the call like this, but we have the loudspeaker. But loudspeaker ultimately, whatever the voice, whatever the response is coming from the mobile, ये मेरे माइंड में जा रहा, और दैट विल क्रिएट द डिस्टर्बेंस। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि if prevention is not possible, then we will take the response, or that we have seen in operation sindoor, that is the already working, कि पहलगांव में जो कुछ हुआ उसके एक महीना के बाद, एग्जैक्ट टाइमलाइन इज नॉट रिकॉलिंग बाय मी, अराउंड 21 days और एक महीने के बाद हमने रिस्पॉन्स किया। तो नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग कि वेन एवर देर इज सम एक्शन ऑफ द टेररिस्ट, तो वी विल डू रिस्पॉन्स। देन अदर वर्ड इज द ए, पी आर PRA। तो ए इज सेइंग कि हम
सारे नेटवर्क को कट करेंगे, वेदर इट इज द ऑनलाइन, वेदर इट इज द ऑफलाइन. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ terrorism. First thing is that suppose that anyone has connected or recruited Manish, और यू कैन से रिक्रूटेड मी कि मनीष आपको इंडिया में टेररिज्म फैलाना है. तो देर इज अ वन वे कि मैं आई एम द रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और आई माइट बी पॉसिबल आई एम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो लेट्स अज्यूम आई एम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो व्हाट आई विल डू कि भाई मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारा टेररिज्म का एक्शन क्यों करूँ. तो आई नीड सम मनी लाइक 1 लाख 5 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ वट एवर द डील आई हैव डन. Okay. So some money is coming. Might be possible this money is not directly to me, or there is some kind of the activity, terrorism activity, कि single person cannot do. It's need a team, like one team leader, some other participate or some ordinate. Okay. So suppose that any other person got the 5 CR for the terrorist activity, and he has given the 50 lakhs to me, or he is recruiting some other person. Okay. So government is saying if we will रिड्यूस और वी विल ब्रेक ऑल नेटवर्क, ना ऊपर वाला रहेगा ना नीचे वाला रहेगा, ना पैसा लेने वाला रहेगा ना पैसा देने वाला रहेगा, मतलब वट एवर द a step, there is the possibility of the terror. So we will try to break down. So, or if it is the online, whether it is the offline, like we have seen the pattern. If there is some strike or there is some, you can say the danga. Okay, so one communal post is going. I'm not saying the any group of the community. I'm saying the communal post. The communal post is the spreading on the Facebook, WhatsApp, Twitter, and public. They have not used their mind, or just they have acted or they reacted, and it's become the दंगा एट लार्ज या बड़े लेवल पर दंगा हो गया. तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी विल ट्राई टू स्टॉप ऑल नेटवर्क सो दैट कि आगे ये काम नहीं करे. And H for human rights and rule of law. When anybody is taking any action, and it is the terrorist action, it is the action taken by the police, it is the action taken by the army, it is the action taken by NRI, NIA. Okay. Then government is saying कि we will consider the human rights कि किसी भी innocent or unknown बंदा का who is not related with the terrorism, they have not to worry, or we will do the justice without any compromise. तो दैट इज द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि हम किसी भी इनोसेंट बंदे को परेशान नहीं करेंगे और परेशान नहीं करेंगे. Then another word is the A, aggregating. The aggregating is say कि now we are seeing that there is some intelligence agency in India, like CID and police. That is the working with the state government, army, CBI, and NIA is working under the central government. So government is saying कि it is very difficult to coordinate all departments. So we will create the one department, or we will aggregate all departments. So a flow of information with a very high. Reason is that if there is some terrorist attack, and just be as amazing, there is some terrorist attack at the same time, 5 locations in India. Then इफ एनी स्टेट इज सेइंग कि नहीं भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा मैं तब किसी और स्टेट को दूंगा, पहले मैं सेंटर को दूंगा, आई विल नॉट सेंड डायरेक्टली टू द सेंटर, टू अ स्टेट. ओके, व्हाट विल हैपन, वो एक्टिविटी हो जाएगा और इनोसेंट पर्सन और इनोसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी destroy, they will have the lots of the problem at last. The government of India is saying कि we will collect our department, and that will be the much uh, big flow and a smooth flowing of the information, and information, or you can say working condition, so we can take lots of the hard action against terrorist. Then it is the saying कि we will create such kind of the situation जहां पर whatever the uh, networking or whatever the situation of the terrorist, we will try to recut each and everything. And last one is the recovery. Recovery
is that कि during the any दंगा और any protest we are seeing कि कुछ लोगों ने सरकारी बंगला को आग लगा दिया. Some person has destroyed government bus, car, government building, private building. So government is saying कि if there is some action is taken by public or terrorist attack or mob, okay, then we will recover from that particular person. Suppose that there is the five group of the person and they have destroyed, they have make the fire in the government public property, and if he will be able to identify to detect, then every penny of amount will be recovered from that person. तो अगर कोई बंदा ऐसा कोई भी गलत काम करता है और ही विल बी आइडेंटिफाई और देन ही विल मेक बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी और उसी से रिकवर किया जाएगा. तो इट विल बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां से दे कैन स्टॉप टेररिस्ट activity in India. Reason is that because government of India has a very good intention कि we don't have any we don't have the any soft corner for the terrorists. There is the zero tolerance policy, and whatever and whenever there is the issue for terrorist, we will work together and we will try it will not happen in future, or we can say कि it will be the end of terrorism in India very soon. So friends, if you have any question related to Prahar or any other thing, you can ask, and after that we can have some more discussion on this topic. So if you have any question, you have anything in mind, so you can ask. Thank you, Manishi. I think Rajvin has a word. It's very, very good topic, something new. I think, yeah, we'll have more comments at the end of the session. Thank you. Yeah. So, so Sana ji, just give me the 1 and 2 minutes more. And actually, yesterday I was on the Bharat 24 on this particular topic. So just I have cut my 2 and 3 minutes speech, or you can say my word. So just I will share. So just give me the 2 minutes, just 2 minutes. Sure. So just 1 second. नमस्कार, आप देख रहे आवाज आ रही है स्वाना जी? Yes, Manishi. जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। अब आतंकवाद के खिलाफ में प्रहार होगा। सरकार की ये नीति अब काम करेगी आतंकवाद के खिलाफ। सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक आपने देखा कि बम के जरिए दहशत फैलाई जाती थी, गोलियों की गड़गड़ाहट दहशत फैलाती थी, लेकिन आज के इस दौर में आतंकवाद का एक नया रूप भी है और ये है साइबर रूप, जिसमें आतंकवाद के लिए आप पूरी तरीके से अगर देखें तो इसका जो पोषण है वो इसी साइबर क्राइम के जरिए किया जा रहा है और इसी के लिए सरकार लेकर आई है अब प्रहार नीति। अब इसे भी आतंकवाद ही माना जाएगा। ये कमर तोड़ने के लिए ये एक प्रभावी प्रहार है। तो ये जो
प्रहार को लाया गया ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछले 70 सालों से हमने देखा कि किसी न किसी तरीके से आतंकवाद हमारे भारतवर्ष को तोड़ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर था या पंजाब था या बॉर्डर था। तो उस चीज को समझते हुए आज जो प्रहार आया है वो आपका जल हो, थल हो या वायु हो, तीनों जगह पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा मेंटल ब्लॉक किया जा रहा है या कट्टरपंथी सोच किया जा रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें अलग अलग तरीके से विकृत किया जा रहा, तो इन हर मोड़ पर प्रहार आने वाला है। और इसका जो फर्स्ट वर्ड ही है प्रोएक्टिव, मतलब कि पहले हम क्या करते थे कि पंजाब में या कश्मीर में कोई एक्शन हो रहा है, आतंकवादी गोली मार रहा है, तो उसके बाद हम एक्शन लेते थे कि आतंकवादी को गोली मारते थे या उसको घेरते थे। अब हम पहले ढूंढेंगे, फिर पहले के पहले हमला करेंगे, रोक देंगे पहले ही। जो SIR में 3D का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, वही चीज आपका यहाँ पर भी आएगा कि हम पहले ही से एक्शन लेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पहले आतंकवादी या अपराधी को सिर्फ गोली मारते थे या उसको हटाते थे, अब कहता है कि जो भी आपको स्पॉन्सर करेगा, जो भी आपको पैसा देगा, आप उसके पूरे सर्कल में हो, किसी भी तरीके से आप उसमें फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो, मेंटली इन्वॉल्व हो, बाय डायरेक्शन के अनुसार इन्वॉल्व हो या आप डायरेक्ट एक्शन में हो, तो हर किसी को उसी पहलू में लिया जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की डेट पर हम देख रहे हैं कि ड्रोन से भी बहुत सारे आतंकवादी, चाहे ड्रग्स हो या गन्स आ जाते हैं। तो हर एक्शन को सरकार समझते हुए, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर होते जा रहा है, इसलिए सरकार ने प्रहार को लाया है ताकि भारत की जनता को बहुत अच्छे से सुरक्षित दिया जा सके, सुरक्षा दिया जा सके और हम यहाँ चैन के साथ रह सके। यहाँ पर बात हो रही है प्रहार की, आतंकवाद की, जो आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए ये प्रहार लाया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी जो एक्शन हो रहा है, NIA अलग डिपार्टमेंट है, CIB, CBID और CID सब अलग अलग डिपार्टमेंट, लेकिन अब जो प्रहार के अंतर्गत में सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे, जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर। अरे ये क्या बीजेपी है क्या? नहीं, इनको आप क्या बोल रहे हैं? आपके सवाल का जवाब, प्रवक्ता क्या ये कह रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि अब एक पूरा टीम वर्क काम करेगा। हाँ जी, तो जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर सारा डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहा है, उसी तरीके से प्रहार में सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तभी ये आतंकवाद पर कंट्रोल होगा। और आतंकवाद का मुखौटा कहीं और नहीं लेके जाना कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करके भाग गया, कोई और कुछ करके। जब हम आतंकवाद पर बात करें तो हम सिर्फ आतंकवाद पर बात करें, चाहे वो जल के थ्रू आए, थल के थ्रू आए या वायु के थ्रू आए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए, तो हमें फोकस वहीं रखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि देश की सारी पार्टी हो, हर किसी को आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, उससे हर किसी का लॉस होता, हम साधारण व्यक्ति का भी। और जो जिस तरीके से इन्होंने बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी थे या राजीव गांधी, उनका शहादत हुआ, उनका वो शहीद हुए, तो हर किसी को लॉस है, तो इस लॉस में इनको और बढ़ चढ़ के आना चाहिए और इस कानून का स्वागत करना चाहिए। हाँ जी, तो सीधा सीधी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, हर किसी पार्टी को आतंकवाद का समर्थन देना चाहिए, समर्थन मतलब इस प्रहार का समर्थन करना चाहिए और आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है। पहले फिजिकल आतंकवाद था, अब ये टेक्नोलॉजी, सोशल और सोशल मीडिया, हर तरीके से आतंकवाद हमारे दिल, दिमाग और हमारे सोसाइटी में आ रहा है। तो हर पार्टी को इसमें आके सहयोग देना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ या मैम। थैंक यू मनीष जी। और आपने वहां पर भी बहुत अच्छा बोला। आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली work to reduce terrorism or in fact eliminate it, but of course it is That's why you have called me कि मनीष से बात करें, तो मुझे लगा कि this is the important topic and this is the related for everyone. We have must be aware कि suppose that we are the suppose that any person who is the in Australia or UK etc. all those things, he is saying कि मनीष मैं आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देता हूँ, कैन यू ट्रांसफर 90 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज सम अदर अकाउंट जहां पर आई विल गिव द डायरेक्शन। तो व्हाट वी डू कि फॉर द 5 लाख 10 लाख वी आर नॉट आस्किंग कि दिस मनी विल यूज फॉर द विच पर्सन विच पर्पस, एंड वी आर कलेक्टिंग द सम मनी, और अपना जो 5-10% का कमीशन हो गया, एंड वी आर सेंडिंग एज पर their direction. So there is the two issue. One issue is that
as being I am the chartered accountant, the one issue is that either income tax issues or GST issues, but you can say the compliance issue, tax issues. Whenever the money is coming, it will be the considered as the income in your hand, and for income it will be the taxation at the rate of the 30%, and it is the coming outside India. So again you have to pay the GST. There is the one thing. Another thing, when you are transferring 80 lakh rupees, 90 lakh rupees to any other person, you are not aware who they are. It means you will be the drag after some time. Suppose that कि मैंने Mr. A, Mr. B, Mr. C सबको 20-20-30 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया, and this money is used for the terrorist, and after that government of India NI will track the whole bank account, and it will be the come to me, कहेगा Manish, why you have given to me to Mr. A, Mr. B, Mr. C, तो we are not aware. तो फिर मेरा अकाउंट देखेगा कि some money is coming in my account, I am giving the some other person. तो even I was not involved, I was not aware, but only for the 5 lakhs, 10 lakh or 5% or 10% के लालच में आके मैं इतना बड़ा गलती कर दिया. ठीक है, there is the one instance. Another instance that there is the some Facebook post, there is the some WhatsApp post, there is the some Twitter post or any social media account, and we have not verified, because on social media right now there are a lot of the information that is the misleading, or you can say the bogus information, or there is the some video or content is created by AI that is not true, that is not a fact. Okay, और we are circulating कि भाई इस नेता ने ऐसे बोला, या यहाँ पर ऐसा हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, या भारत का सेना काम नहीं किया, वट एवर द इंफॉर्मेशन, and I am promoting through social media, or I have taken the information and I have the discussed with some other person. So again, it will be considered as the act of the terrorism. So that's why I am saying, by intention, by mistake, you are taking any step towards this, then you will be also in that hell. So stop doing all nonsense thing, whether it is the online, social media, or anywhere. Just you have to apply before passing any comment, any information, any video to any other person, or in the WhatsApp group or masses group. Otherwise, when you will be will come in trouble, nobody will be aware. Even what will happen in future, nobody is aware. That I want to say. Yeah, I haven't read the whole policy, but मनीष जी, ये वाला काम जो आपने अभी लास्ट में मेंशन किया, ये तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस ही करते हैं. So is there something special for them, or it's just the people, अभी तो क्या आम है कि जनता? देखिए, अब इतना ज्यादा नहीं होगा. सपोज दैट देर इज सम इंफॉर्मेशन इज कमिंग ऑन द व्हाट्सएप, और देर इज सम इंफॉर्मेशन ऑन द फेसबुक, ट्विटर, जस्ट आई हैव द reacted, or you can say the forward to any other person or in the group. So might be possible there will be no such as the big action, but if the government, suppose that I'm the big influencer or I'm the big person, okay, and I am sharing with the other person, or suppose that I have the some student or in my office, okay, so just I'm sharing, so they understand कि whatever the Manish sir is saying, it is the 100% correct, 100% right. What will happen कि वो उसके अनुसार act करेंगे, तो definitely I will be responsible. So before forwarding any message, before forwarding any video, if you are not aware whether it is the right or wrong, प्लीज डोंट डू इट. हाँ, ये आपके फैमिली से रिलेटेड है या कुछ है, यू कैन डू. अदरवाइज आज की डेट पर इट इज द रिस्की थिंग टू फॉरवर्ड और टू सर्कुलेट if you are not aware कि what is the fact. I think it is important also because, yeah, to control the infodemic part, basically. Yeah, ma'am. Yeah. Rajvin, you want to share? I just think that it's a very good session, and thank you for giving so much of information on this new topic. Thank you. So, okay, ma'am. Thank you, Manish, can have the conclude. for making us aware and also discussing all these financial aspect as well, because that is also important. So thank you. Thank you so much, everyone.